चलो, now we'll see how to convert galvanometer to voltmeter. उसके लिए little bit voltmeter के बारे में we are learning. So voltmeter is a device which measures potential difference across any 2 points in the circuit. वही काम है ना voltmeter का, to potential difference find करने का. Suppose here bulb is there. I want to know the voltage across this bulb. I will connect a voltmeter, and the voltmeter will show 50 volts, means bulb को 50 volts आ रहा है बोलते 50 volts will show. It is a measurement. Okay, to find the voltage, and always it is connected in parallel. Okay, voltmeter is always connected in parallel. So now we have only galvanometer to you. I want to find the potential difference, so that I want to convert this galvanometer to voltmeter. So उसके लिए आपको simply एक सीरीज रेसिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, हाई रेसिस्टेंस ऐड करने वाले. दैट्स इट, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. डन. ओके. नो. चलो नेक्स्ट. कन्वर्शन ऑफ गैलोमीटर टू वोल्टमीटर. सो उसके लिए आपको क्या करेंगे, गैलोमीटर आपके पास है. वी हैव टू कनेक्ट इन सीरीज, मतलब ये हाई रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू वी हैव टू पुट, हाई रेजिस्टेंस वी हैव टू पुट हियर इन सीरीज में, सो दैट देखो आईजी करंट दैट मच शुड नॉट फ्लो, राइट. आपको करंट गैलोमीटर करंट में आईजी शुड फ्लो. एंड दिस इज अ बल्ब, मान लो दिस इज अ बल्ब. ओके, बल्ब का है सम रेजिस्टेंस, राइट. आई वांट टू मेजर द अक्रॉस दिस बल्ब वोल्टेज. सो आपके पास गैलोमीटर इज देयर. आपको क्या करने का, गैलोमीटर में आई विल कनेक्ट ए सीरीज हाई रेजिस्टेंस एंड आई विल कनेक्ट अक्रॉस द बल्ब. खत्म. क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस वर पैरेलल, राइट. द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस दिस वन. तो हाउ टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस दिस गैलोमीटर मीन्स, आपको क्या करने का, देखो गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. High resistance we are connecting in series, and potential difference across the given load resistance is the sum of the potential difference of the galvanometer and potential difference across the high resistance. So this voltage is nothing but the voltage drop across the galvanometer plus voltage drop across the resistance. Okay, that is the voltage. So how to calculate this one, देखो, V is equal to Ig into G plus R. खत्म. बैट ईयर बल्ब का अक्रॉस जो भी वोल्टेज कैसा आएगा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस टू रेसिस्टेंस इज नथिंग बट द बल्ब का अक्रॉस. सो आई जी इंटू जी प्लस आर. फ्रॉम दिस दे विल टेल टू फाइंड आर. कितना, हाउ टू कन्वर्ट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट सीरीज बोल के, एंड फाइंड आर मीन्स यू हैव टू फाइंड आर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. V is equal to Ig into G plus R. If you try to write in this fashion में, R is equal to V by Ig minus G. But you have to remember that like this. Okay, V is equal to Ig into G plus R. G is the galvanometer resistance, R is the external resistance, and this is nothing but voltmeter. तो गैलोमीटर लेगा, इनसाइड रेजिस्टेंस लेके एक डब्बा बंद करके, टू वायर्स विल बी देयर. खत्म. वी हैव वोल्टमीटर ओनली. अगेन कस्टमर आएगा आपके पास, सर मेरे पास गैलोमीटर में, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर. आप क्या करेगा, सिंपली यू विल कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला द रेजिस्टेंस. यू विल गेट कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस विल ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, एंड यू विल कनेक्ट सीरीज, एंड पूरा बंद कर दो, एंड टू टर्मिनल्स विल बी आउटसाइड. दैट्स इट. Now wherever you want to find the voltage, you can connect and you can show the voltage. Okay. So like this, we convert galvanometer to voltmeter.
ये कन्वर्शन में से कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है. मीटर ब्रिज आल्सो मेजरली दे आर आस्किंग. जेई मेंस में डोंट लीव एनी टॉपिक. अब एक वन चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आएगा, सो दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन. एंड दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर टोटल में. आपको बड़ा चैप्टर्स में इजी चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी. लेस फॉर्मुलास, पूरा सर्क्यूट्स ओनली, यू कैन एबल टू सॉल्व. राइट, हो गया. चलो ना करो, क्वेश्चंस करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला श्रीराम? ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला. बाजू में ऐसा ड्रॉ कर लो कभी भी. ये क्वेश्चन में आपको ये लिख दिया तो यू कैन फाइंड द एनीथिंग. आई जी. एंड दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज. Okay, so this diagram अगर what is the Ohm's law? V equal to IR, right? I into this two resistance. देखो I into this two resistance. Since they are series, they are adding resistance. Okay, चलो करो. A galvanometer has a resistance of G is 50 ohms. Galvanometer resistance. And its full scale deflection current मतलब IG 10 milliamperes. What resistance should be connected in series with the galvanometer so that it can form a voltage of 10 volts, right? Maximum voltage is 10 volts, so V is equal to 10 volts. Now use the formula. From that you can find R. R is how much? Sir 950. Sir, you made it. 950 is answer. So अगर मैं 950 is connected in series with the galvanometer resistance, then it will convert into voltmeter. Okay. Now if they ask, suppose same question में find the resistance of the voltmeter. So what you will do? Complete voltmeter का resistance चाहिए. Here you got is 950 ohms, right? Total voltmeter resistance is they connected in series, right? See, this is 1000. this is the voltmeter का. दोनों resistance add करो. So 950 plus 50 ohms. So 1000 ohms is the answer. So voltmeter resistance is 950 plus galvanometer resistance is almost 50. They both are series, right? 1000 ohms is the answer. Understood? Sure. Galvanometer with scale divided into 100 equal divisions and has a current sensitivity 10 divisions per milliampere. मतलब from that I can find IG or voltage. He's telling voltage, right? Voltage we can find from that. How can you convert into voltmeter of sensitivity 1 volt per division? Resistance of galvanometer is given. Question करो अच्छा से. IG बोलो पहले. IG so much. एक डिवीजन 10 डिविजन इज 1 मिली एम्पियर. 100 इक्वल डिविजन का कितना एम्पियर आएगा करंट इन मिली एम्पियर बोलो. 10 milliamperes. 10 मिली एम्पियर. यस. देखो 10 डिविजन इज 1 मिली एम्पियर, राइट? 10 डिविजन is they told 1 milliampere. So 100 divisions is how much? 100 divisions is question mark. So 100 by 10 is 10 milliampere. So IG is 10 milliampere.
In terms of the sensitivity, they'll give current sensitivity, voltage sensitivity. Okay. Okay. How can you convert into voltmeter? Matlab, you have to find the resistance of the final answer is resistance. We have to find. We should be connected in series, right? And galvanometer resistance they given as 5 ohms. And similarly, voltage कितना दिया? 1 volt per division. 1 division में 1 volt. 100 divisions में you have 100 volts. So find out. We're converting divisions. मतलब आपको galvanometer में if you see there is a lines. These are divisions. Okay. They'll give 1 division is nothing but from here to here 1 division is nothing but 1 volt per division. वैसे बोलेगा. So 9995. Yes, 9995. 995 is answer. Same formula. V is equal to Ig into G plus R. So with the R we have to find. So 995. Yeah, ohms. No करो. No, आपको दोनों mixing together रहेगा. Try करो. When a resistance of 5 ohms is shunted with a moving coil galvanometer. Galvanometer को we can call moving coil galvanometer. Okay. It shows a full deflection current of this much. However, if 1050 resistance is connected with the series with the full scale deflection of 20 volts, 25 volts, the resistance of the galvanometer is so much. So two different cases में the given. First case में क्या है? If resistance of 5 ohms is shunted with the moving coil galvanometer. So this is a galvanometer. I connected. Okay, shunted with the 5 ohm resistor. So इसमें तो IG जाएगा. This will be I. This will be I minus IG. Oh, 5 ohms connected है. They observe that there is a full scale deflection of कितना IG they given as 250 milliamperes. Like this is ammeter terms में they given, right? However, when 1050 resistance is connected in series with the full scale of voltage, मतलब second case में क्या किया? Galvanometer में he connected 10. देखो high resistance is connected, so that becomes like a voltmeter, right? Okay, it gives full scale deflection. So इसमें IG is flowing and इसमें voltage is 25 volts. Okay, in this way he's trying to find the resistance of galvanometer. G is how much? So use the two equations, and here what is same in this in दोनों में? IG is same. IG is a full scale deflection. Same. So make the equation such a way that IG बनाओ, इधर भी IG बनाओ, equate करो, आ जाएगा. इसलिए हम इसका क्या यूज करेंगे टेल में फॉर्मूला? IG इंटू वोल्टेज इज सेम, राइट? IG इंटू G बाद में सब्सट करेंगे इज इक्वल टू I minus IG into R. Explanations are right. So from this I want IG. So IG into G is equal to IR minus IG into R. So if I take this side and IG कितना होगा from this? IG times G plus R is equal to IR. Therefore, from this IG is equal to IR by G plus R. Now if I substitute the values, इसमें R value कितना दिया? 5 ohm, right? So 5I by, ठीक है, IG तो बाद में सब इक्वेट करेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, लास्ट में करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन समझ में? एक्सटर्नल डिस्टेंस R कनेक्ट किया, so IR by is 1. Or you can, if you want to get confused बोलते, S you can put, right?
एस लगा है ना शंट रेजिस्टेंस, यू वांट टू पुट एस, एस लगाओ चाहे तो, नो प्रॉब्लम राइट, एनीथिंग राइट, आर एंड एस बोथ द सेम। हाँ, नाउ इसका, नाउ इसका क्या इक्वेशन है, v इज इक्वल टू, ये g है इंटर रेजिस्टेंस, ये r मान लो, सो क्या होगा आई जी, v इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। नाउ इधर v इज 25 वोल्ट्स, ठीक है, फ्रॉम दिस आई जी इज इक्वल टू v बाई g प्लस आर, right here 5 ohms he told resistance 5 ohms is 100 with the resistance, okay, हाँ, so here R1 मान लो, फिर से आगे कंफ्यूज हो जाएगा, right, R कैंसिल हो जाएगा नहीं तो, okay, now IG is same, IG is same, now equate both of them, IG is same, equate both of them and calculate, our intention is to calculate galvanometer resistance, G चाहिए, this R1 क्यों लिया, because value is different, इधर R क्यों लिया, value is different, now substitute, equate, these two are equate करो, so I into R by G plus R is equal to V by G plus R1, okay, इसमें IG into I minus IG, right, हाँ, now find, equate, So we don't know what I is. We only know what I IG. we don't know, right, We know IG. हाँ, We know IG. okay, IG टर्म्स पे लेके आओ, no no देखो, it show when resistance of shunt resistance for a moving coil galvanometer, it shows full scale deflection for a current of 250 milliamperes. However, 1050 resistance is connected with the series, it scores full scale deflection, full scale voltage of, हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन में तो वो समथिंग है, क्वेश्चन में ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर, हाँ, एक्चुअली ही हैज गिवन, थोड़ा टेढ़ा में दिया है, बट आई इज इक्वल टू, दे गिवन एज 250 मिली एम्पेयर्स, हाँ ये ले लो, आई, आई इज 250 मिली एम्पेयर्स, ये क्वेश्चन वे ऑफ फ्रेमिंग थोड़ा डिफरेंट है, हाँ, नो सर्च करो, आई इज गिवन, आर इज गिवन, R1 is given, V is given, substitute and find the G. So कितना है, 250, 250 into 10 power of minus 3 into R is how much here, 5 by G plus 5 is equal to V is how much, 225 by G plus R1 is 1050. Sir, G is 50. G is 50, yes. आया, substitute करे तो we'll get the answer as 50. Okay, JEE means question is there, करेंगे, ना करो without help. A galvanometer has resistance this much and 30 divisions on both sides has a figure of merit, 0.05. Figure of merit is nothing but sensitivity only, like 0.005 by ampere per division. One division में इतना ampere है. That is called sensitivity. Figure of merit is nothing but sensitivity only. Okay. The resistance that should be connected in series to become voltmeter of up to volts. No, voltmeter का question is given. करो. Is asking to find R.
80. 80 is correct answer. 80 is answer. Good. देखो गैलोमीटर के बारे में G and resistance R IG. Okay, so what is given? G का value they given as 20 ohms and 30 divisions for this much division. Per division में कितना? 0.005 into 30. So IG is how much? 30 into 5 by 1000. So it is 15 मतलब 0.15, right? 0.15 amperes. So now IG, you know, V how much? 15 volts. So 15 volts is a V. Now use the formula V is equal to IG into G plus R. We have to find the value of R. So everything you know, V you know, IG you know, G value you know, R find करने का. So R is, if you solve, if you substitute, we get R is equal to 80 ohms. So they'll give sensitivity. मतलब sensitivity means one कितना small current it can sense. ओके आपको मेजरमेंट स्टार्टिंग ओनली दो रीडिंग 1 एम्पियर मींस यू कैन नॉट मेजर 1.3 1.5 1.6 like if the each reading is 0.005 then you can it is more sensitive, the machine is so more sensitive, you can measure minute current also. Okay, that's why they given 0.00 amperes per division. एक division का इतना current है, so we can find minute current 1.003 also you can find that device में. Okay, so by this complete chapter successfully done.